Hi students, I hope you all are doing well. In today's session, I am going to discuss how metallic oxide is reduced to the free metal. इससे पहले हमने किया था कि कंसनट्रेटेड ओर को मेटेलिक ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो वहाँ पर हमने दो प्रोसेस किए थे, वन इज़ कैल्सिनेशन एंड अदर इज़ रोस्टिंग. नाउ आफ्टर कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग our next step is reduction of metallic oxide to the free metal. In this process, first is the Smelting is the process of converting metal oxide into metal using a suitable reducing agent. And here the reducing agent used carbon in the form of coal or coke. Then this process is known as smelting. कि अगर मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कार्बन यूज़ करें इन द फॉर्म ऑफ कोक और कोल, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग. कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स which are used to convert metal oxide into metal are carbon monoxide, aluminium, because these are most electropositive elements. Now example of smelting: ZnO when treated with carbon in the form of coke, upon heating it gives Zn plus Co. Similarly, SnO2 plus C, that is coke, upon heating gives Sn plus Co. This is smelting, reduction with carbon to convert metal oxide into free metal, that is smelting. Now next is with aluminium. How metal oxide can be converted into metal with the help of reducing agent aluminium. With aluminium, this process is known as Goldschmidt aluminothermite process. Here metal oxide on reduction with aluminium powder gives metal, and in this method it is used for the extraction of metals like chromium, iron, manganese, silicon. For example, when aluminium powder is treated with chromium oxide Cr2O3, upon heating we get Al2O3 plus Cr. Here delta H is equal to negative. Now in reactant side aluminium की oxidation state है 0 एंड प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. सो 0 से आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंज हुई? +3 से. सो दैट्स वाई एल्यूमिनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज when Al is treated with Fe2O3, upon heating we get Al2O3 plus Fe. Similar, when manganese oxide is treated with aluminium we get Al2O3 plus Mn, and with SiO2 we get silicon. So this is how metal oxide is converted into metal with the help of reducing agent aluminium. Now next is reduction by hydrogen. हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन तभी यूज़ करते हैं अगर कार्बन के साथ कोई भी मेटल ऑक्साइड कार्बन के साथ रिड्यूस ना कर सके. इट इज़ यूज्ड ओनली इन दोज केसेस वेयर कार्बन डज नॉट वर्क. फॉर एग्जाम्पल, टंगस्टन ऑक्साइड WO3 व्हेन ट्रीटेड विद H2, अपॉन हीटिंग वी गेट W टंगस्टन प्लस H2O. Nickel oxide when treated with H2, upon heating we get nickel plus H2O. Next is electrolytic reduction. Highly electropositive metals like alkali metals, alkaline earth metals, aluminium, etc. are extracted by electrolysis of their fused salt. And this process of extracting metals by electrolysis is called electrometallurgy. इलेक्ट्रोलिसिस के साथ जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटल. एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl बाय इलेक्ट्रोलिसिस. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, वन इज
anode and other is cathode. Oxidation will take place at anode and reduction will take place at cathode. Now at anode Cl negative gives Cl plus electron. Cl जो है वो मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, सो दैट्स वाई 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. अब कैथोड पर 2Na पॉजिटिव जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, सो वी गेट 2Na. नाउ ओवरऑल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन cancel, so overall reaction is 2NaCl gives 2Na plus Cl2. Here sodium is liberated at cathode and Cl2 gas escapes by the electrolysis of molten NaCl. Next is fluxes. During smelting, an additional substance called flux is added from outside. Flux when mixed with gangue to form a slag, which is in the molten form and float over metal. Now there are two types of fluxes, and depending upon the nature of impurities present in the ore, fluxes are classified into two types, that is acidic fluxes and basic fluxes. For acidic fluxes, impurities are basic. If impurities are basic in the ore, then acidic fluxes are used. For example, borax, silica, these are acidic fluxes. And in case of basic fluxes, if acidic impurities like silica, phosphorus, pentoxide present in the ore, then basic fluxes like limestone, hematite are used. These are fluxes. This is all for today's session. Thank you.